Good evening, sir. Good evening, Archie. ये ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना? अच्छा, you could solve this question ना? Yes, इसका sir. My answer came as 1.28 around. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, the answer I was telling is 1.12. बताओ क्या हो रहा है भैया? इधर उधर की ज्वाइन हो रही है, ज्वाइन नहीं कर पा रही। अच्छा, आज ना सबसे पहले हम लोगों को इन लोगों को ज्वाइन करने दो, फिर उसके बाद सबसे पहले अच्छा हो गया। हमें सबसे पहले आज वर्टिकल सर्कल देखना है। वर्टिकल सर्किल। देखो, सबसे पहले ना इसमें तीन कंडीशंस होती हैं, मतलब जिसको अपन को एनालाइज करना होता है। वैसे कंडीशंस तो बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन हमें एक्चुअली तीन कंडीशंस बेसिकली एनालाइज करनी होती है। अब वो क्यों एनालाइज करनी होती है? क्योंकि कभी कभी जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इस क्या नाम है। अच्छा, एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें कभी कभी तुम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करोगे कि जो फोर्स होता है ना, वो होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। यू होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन दिखाऊं इसके टाइप का? देखो, वर्टिकल सर्किल स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जैसे अच्छी क्वालिटी क्या है तुम लोगों के लिए, वो मतलब एडवांस वगैरह में कभी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दी होती है और तुम लोगों को निकालना होता है कि इसमें बताओ वो क्या है। दिखाता हूँ मैं, अभी क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ तभी समझ में आएगा।
मैंने देखो ग्रुप पे सेंड किया है। ग्रुप पे सेंड किया है, ग्रुप पे एक बार देखो। मैं अभी यहाँ पे अटैच कर दूंगा, सिंक होने में टाइम लग रहा है इसको। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुकना। कोई- ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला दिया है। इस क्वेश्चन को देखो, Sir, इस value क्वेश्चन। of m is 7. हाँ, you have to find the value of m and the value of n. So the value m of m is 7. yes, m is 7, correct. Actually, did you solve this earlier? Yes, no, sir. First, M is 7, and what is the value of n?
Sir, n is 8. n is 8. हाँ, n is 8. Correct. What about others? शिता, शिता, लव्य. If you could solve this question, try solving this one. Sir, हम्म. can you solve अरे, first one? नहीं हो पा रहा है लव्य तुमसे. Sir, देखो, इसमें दिया क्या है ना हमको. पार्टिकल इज मूविंग इन कंजर्वेटिव फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी गिवन एज दिस. तो फोर्स जो होगी इसकी, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप. मतलब उस हिसाब से डी यू बाई डी आर करना चाहिए मुझे, है ना. मतलब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा. बेटर है कि इसको डी बाई डी लिखो, बेटर है. अब देखो, इसमें क्या है कि इसमें एक्स और वाई के टर्म्स में दिया हुआ है. तो एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस 6 आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई प्लस 8 जे कैप. ये वही फोर्स पर
एक्सेलरेशन निकालना है हमें। मास दिया हुआ है क्या इसका? मास 2 kg है इसका, तो हमें पता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि 2 kg 2 इंटू ए इज इक्वल टू -6 I कैप प्लस 8 J कैप, यानी कि एक्सेलरेशन जो हो गया हमारे पास वो हो गया -3 I कैप प्लस 4 J कैप। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये है, एंगल बिटवीन, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन तो ये पता चली गया हमें, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसके -3 और 4, तो हम v इज इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं। तो v इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है। u इनिशियल वेलोसिटी 2 I कैप -3 J कैप दिया हुआ है, तो हम v वेक्टर जो हो गया हमारे पास 2 I कैप -3 J कैप प्लस -3 I कैप प्लस 4 J कैप इंटू 1 सेकेंड। तो तुम्हारी जो वेलोसिटी हो गई v वेक्टर वो हो गया 2 I कैप -3 J कैप -3 I कैप प्लस 4 J कैप, हो गया -I कैप प्लस J कैप, ये वेलोसिटी हो गई। तुम्हें यही दोनों चाहिए। अब इन लोगों ने बोला है कि एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो v वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, मॉड v मॉड a cos थीटा। v डॉट ए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू मॉड v इज √2, मॉड a इज 5, 16 प्लस 9 25, √25 इज 5 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 7/5 √2। तो थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 7/5 √2, तो ये m हो गया। गलत है? तो भाई ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। when the particle crosses the x axis, x is equal to this। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए पार्टिकल फिर दोबारा एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करता है? इनिशियली पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये थी और ये ओरिजिन पे था, मतलब एक्स एक्सिस भी 0 पे था। फिर दोबारा कब जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो मतलब y 0 होना चाहिए, ऐसा है ना? देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये 0,0 पे था। अब फिर दोबारा ये एक्स एक्सिस पे कब क्रॉस करता है, ये बोल रहा है इस डिस्टेंस पर, जो x इज इक्वल टू -3/n बोला हुआ है। यानी कि इस दोबारा जब पे क्रॉस करेगा तो y 0 होगा इसमें, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, y विच इज 0 इज इक्वल टू uy इंटू टी। uy क्या था हमारे पास, -3 J कैप, -3 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay हमारे पास 4 है इंटू t²। इससे हम टाइम निकाल लेंगे कितने टाइम बाद ये फिर दोबारा क्रॉस करेगा, तो ये जाएगा 3t इज इक्वल टू 2t²। एक तो इससे टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड आ गया, जो हम जानते हैं पहले एक्स एक्सिस पे था, और फिर t इज इक्वल टू 3/2 आ गया, यानी कि 3/2 सेकेंड के बाद फिर दोबारा से क्रॉस करेगा ये। बाकी सबके लिए मैंने ये लगाया है y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू t²। अभी फिर उसके बाद मुझे टाइम तो पता चल गया, इतने टाइम में इतने x डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो निकालने के लिए x इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू t² हो जाएगा। यानी कि ux हमारे पास कितना है, 2 इंटू 3/2 प्लस हाफ इंटू ax हमारे पास -3 है इंटू 3/2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 3 -9 -27 -27/8 -3/8।
x इज इक्वल टू -3/8, इन्होंने बोला है -3/n, तो n की वैल्यू 8 हो गई। ये है आपके आंसर। और ये ठीक है, लगे इजी था। Yes, sir. हाँ कुछ नहीं, बस मैं एक्चुअली तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट तुम कैसे अप्लाई करते हो, कब अप्लाई करते हो। एक ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लो, ये है, और एक और दिया है मैंने, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। इसके बाद बस वर्टिकल सर्कल्स देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आज ये कंप्लीट कर दूंगा आप लोग। Is the answer approximately option D? First one. I think the answer is D. The answer should be B. Answer should be B actually. So how we can explain?
Let me see. Rubber thread exerts a force which is equal to the extension. हाँ वो तो वही है ना kx. ओके. अच्छा, tell me actually first, what concept did you use to solve this question? Sir, I used work done is equal to change in potential. That one, potential energy. Yeah. So I did mgh minus mgh. What about spring force? Because the spring force is also there. Because why it is there? Because they have said na rubber thread exerts a force which is proportional to its extension. Yes, yes. The meaning is force is proportional to the extension, and the force is when force is proportional to the extension means kind of forces that you see is your spring force F is equal to kx. है ना? Yes. श्रेयता शांत है. श्रेयता तुम्हारा आंसर आया था पिछले वाला? हाँ सर पिछले. अच्छा देखो, see, students who are doing the question, who are solving the question, keep on solving. I'm solving it. Just if you get the answer, it's okay. If you do not get the answer, check with me my working. See, Archie, what is the condition? Na? Initially, the position of unstretched thread of the rubber thread was 40 centimeter. Initially, this was 40 centimeter. Now the ball has been moved upwards, and this position has become like this, and now the new length has become what? 1 meter. So obviously the stretching in the thread is what? 60 centimeter. Correct? Yes, sir. Now if we apply the work energy theorem, because here also this thread, this ball, tennis ball was initially at rest. Also when it is moved upwards, at that time also this is at rest, v is equal to 0. Yes. So now here if we apply the work energy theorem in these two positions, the total work is done by what forces? Work is done by your external agent, because they are saying work is done by external agent, plus work is done by mg, plus work is done by spring force kx. This will be equal to 0. 0 minus 0. Initial kinetic, final kinetic energy minus initial kinetic energy. External work done we have to find. Work done by mg will be what? Mg is this downwards, and it is displaced by 60 centimeter up. So it will be minus mg into 0.6. 60 centimeter I am taking as 0.6 meter. And work done by the spring will be, initially it was unstretched, later it was stretched by 60 centimeter. So there it will be stored as potential energy. It will be half into k into 0.6 whole square. This will be equal to 0. So work done by external will be equal to, what is mass? It is 60 by 1000, 0.06 minus 0.06 into 0.6 into 10 plus half into, acha, okay, you do not know k here. Yes. सर kx is equals to mg कर देंगे ना. अच्छा हाँ, kx is equal to mg कर देंगे, because it is मतलब उस पोजीशन में है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, क्योंकि यहाँ भी इक्विलिब्रियम ही है ऊपर में. कि वहां जाके तो वो रुक गया ना. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. Here this kx will be equal to this mg.
So using this kx is equal to mg, we can find kx is equal to mg. So k into x is 0.6. Mass will be equal to your 0.06 into g is 10. So k is equal to 1. So it will be 1 into 0.6 whole square will be equal to 0. So W external you should be able to get now. You will get a 0.6 square, 0.6 square plus minus 0.6 square by 2. 0.6 square by 2. 0.6 into 0.6 divided by, what is this? Hmm. Sir, the answer comes to 0.54. It's coming. Yes, sir. How? 0.6 whole square by 2, na? Yes, so it's 36 by 200. Sir, and one more time is one more term is there, mgh. That also we have added, na? Sir, I think work done by spring force is also negative. The spring is extended here. Initially it was it will be negative. The other way you can do is, or you can just do the change in mechanical energy. Mg final. Mg. Correct. It will be added. Because this confusion you won't have when you will do work done by external energy is equal to change in mechanical energy final minus mechanical energy initial. There you won't get this kind of mistake. Final will be your mg into 0.6 potential energy plus half kx square. There you will do it. It will be 0.6 whole square into 3 by 2. Now you will get, I think, 0.54. Now try solving the second part. See, if you are getting confusion, if you feel confused, work done by spring, why to take negative, why to take positive. Here, I was actually
careless, but you have to see like this. Whenever the spring force is downwards, and the spring is being expanded upwards, means it is moved upwards, so the force is towards down, this is towards up, so work done by the spring will be negative half kx square. And if the force is actually work done by the spring is always negative. Sir, for second part, option B, हाँ 4.1. 4.1. अच्छा, let me check. No, it's saying 5.1. Do you want me to solve, Archie? Sir, I can try. Right, but just tell me what concept you have used. It's simple conservation of energy at the topmost position from where you have released to the Yes, sir. bottom position when it tries to reach there. हाँ रूट 26 आ रहा है. रूट 26 सर, हाँ तो 5.1 आया ना, हाँ 25. 5.12 कुछ ऐसा आ रहा होगा. सही है, तुम्हारा सही आ रहा है. अच्छा, just check what mistake you have done. Okay, sir. Sir, so half mb square should be what? Half mv square should be equal to your half kx square plus mg into 1 meter. Okay, okay, okay. Because the condition is like this, na? Yes, yes, yes. It has been extended by 1 meter. Yes. Means it's a new position. So the potential energy at this position will be mg into 1 meter. But it's Actually, I forgot to put half kx square. Be careful here. Here the potential energy will be half kx. What? Vijita, what? Option C. Option C. Yes, option C is correct. You have to put the value half into 1 into 0.6 whole square plus 0.06 into 10 into 1. And this should be equal to half into mass is what? 0.06 into v square. If you solve this one, you should be getting velocity as root 26. It should be equal to 5.1. Just conservation of energy between this position and this position when it's about to collide the bottom. Sir, why in this case x is not 1? X is not 1. No. Means X is it's C. stretching from 1 to 0, right? Means it's No. It's stretching from its natural length was 40 centimeter. Okay. Then And it's 0.6. It has been stretched by 60 centimeter. That's right. का कोई डाउट तो नहीं है? हेलो. अच्छा, सिंपल मतलब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब इसमें देखो, तुम लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने चाहिए. ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ भी नहीं बोलूंगा मैं इनको, पर एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं. ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तुम बाद में करना, अभी थोड़ा सा वो कर लें. लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी नॉलेज होती है. एसएचएम की नॉलेज है, एसएचएम वाली? Yes, sir. हाँ,
later after telling this, after this vertical circle, I'll tell you about this one. If you know this one, it will be easy. If you know simple harmonic motion, it will be very easy. But for the students who do not know simple harmonic motion, it will be a bit complicated. What is a vertical circle? There are three conditions in a vertical circle. First condition is condition for what is the situation you need to know first. There is a mass m which is attached by a string. It is now being rotated in a circle like this. First condition we have to find out is condition for looping the loop. Condition for looping the loop. अच्छा, condition for looping the loop. What we need to find out, what should be the velocity here so that it does the complete circle. Now they say u should be greater than or equal to root 5gr. How do we get this condition? The condition is if it has to complete the loop, then the velocity at this particular point b should not be equal to 0. Velocity should not be equal to 0 here, but tension can be 0 here. Getting my point? At the point B, there are 2 points, A and B. Try to analyze it. See, the condition for looping a loop, what it says, that whenever a particle is projected from here, it should complete the whole circle. For that, we are saying velocity should not be equal to 0. Tension can be equal to 0 here. What is the meaning of this? If you take the other condition that tension is not equal to 0, but velocity is equal to 0, then what will be there? Here it will stop. Velocity is not there, even though tension is there. So what it will do, it will not complete the circle. It will just fall down like this. Velocity is 0. It will just drop down in this direction. Okay. Then tension is not equal to 0 and velocity is equal to 0. In that case, it will just fall down like this. So there is no condition of loop, completing the loop. Getting my point? So to complete the circle, what should be the desired condition? See, you will say, sir, why should we do tension equal to 0 here? Tension is also, it's not needed. Now the tension should also be equal to 0. B is not 0, T is not equal to 0. Then also it will do the loop now. But remember, we are trying to find out the threshold condition. Threshold condition
for which it will complete the circle. Of course, when tension is not equal to zero, tension is not equal to zero, velocity is not equal to zero. In that case, also it will complete the circle. But we have to find out the minimum condition at which it will be able to complete the whole circle. Okay, for finding out the minimum condition, minimum velocity at the bottommost point, this condition we have to apply. Remember this. Now, between A and B, when you find V is not equal to zero, you have to just, in the case of vertical circle, you have to apply only two conditions. One is circular motion equation, and the other is conservation of energy, because only conservative forces are acting. Whenever vertical circles are there or any circle is there, you try to see, you have to apply only these two conditions. Conservation of energy is there because only conservative forces are acting. Tension is always perpendicular to the velocity. That's the only non-conservative force, but we are not considering that because tension is always perpendicular to the velocity or displacement. That's why the work done due to this is zero. Okay, so these two we are applying. Just apply these two and try to find out can you find out the condition U is greater than or equal to 5 GR. Just do the calculations. मैं कर देता हूँ फटाफट. Conservation of energy. A to B will give us half mu square is equal to mg into 2r plus half mv square. पहली कंडीशन हो गई आपको, है ना. अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u square is equal to 4gr plus v square. दूसरा, at B सर्कुलर मोशन इक्वेशन t plus mg, t2 लिख देता हूँ उसको, t2 plus mg is equal to mv square by r. पर हमें पता है कि यहाँ पर टेंशन जीरो है, तो mg is equal to mv square by r. mm कैंसिल आउट कर दो, v square is equal to rg हो गया. आ गया, इसमें पुट कर दो ये ऊपर, u square is equal to 4gr rg, ये 5gr हो गया. तो u की जो वैल्यू है √5gr आ गई इनिशियल कंडीशन में. अब ये मिनिमम वैल्यू है वेलोसिटी की. अगर इससे ज्यादा करोगे तो वो लूप तो करेगा ही करेगा, ठीक है. इसीलिए दिस इज द कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, मिनिमम कंडीशन. तो मतलब कभी भी अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें ऊपर की वेलोसिटी अननोन है और उसमें बोला जा रहा है कि देयर इज इट हैज टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, इन दैट केस तुम लोग मिनिमम कंडीशन पे u की वैल्यू √5gr पुट कर सकते हो. दूसरी कंडीशन है, समझ में आ गया ना. आर्ची, लव्य, सृजिता, अशिका. Yes. सर अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं. दूसरी कंडीशन है कंडीशन फॉर लीविंग द सर्किल.
हमको यहाँ पर ना रेंज निकालनी है, किस वेलोसिटी की रेंज में हमारे पास ये लीव कर सकता है। अब देखो मुझे ये बहुत समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास पार्टिकल यहाँ तक आ जाएगा, अगर ये पार्टिकल इससे नीचे रहा तो ये ऐसे ही झूलता रहेगा, एसएचएम टाइप करता रहेगा अगर ए और सी के बीच में रहा। अगर सी से ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे डी पोजीशन पे पहुंच गया और बी तक नहीं पहुंच पाया, मतलब डी तक पहुंच गया लेकिन बी तक नहीं पहुंच पाया, तो ये ऐसा करेगा, ये ऐसे करके इधर गोल घूमता हुआ ऐसे करके गिर जाएगा, सर्किल नहीं कंप्लीट करेगा। तो मतलब मोशन तो करेगा पर इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सर्किल। दिस इज द कंडीशन व्हेन इट विल लीव द सर्किल। अब इजी चीज क्या है कि तुम्हें ये पता है कि ये सर्किल को लीव कब कर सकता है, जब ये सी और बी के रेंज बीच में कहीं भी पहुंचता है। सी तक पहुंचने की सी पर कितनी वेलोसिटी, सी तक पहुंचने के लिए यू कितनी होनी चाहिए वो निकाल लो। बी तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितनी वेलोसिटी चाहिए वो तो तुम्हें पता ही है, √5 g r। तो सी तक पहुंचने के लिए टू रीच सी, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू mgr प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जस्ट टू रीच सी बोल रहा हूं मैं, जस्ट टू रीच सफिशिएंट कंडीशन बस। तो मतलब वी में मान रहा हूँ 0 है यहाँ पे। तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू mgr हो गया, एम कैंसिल कर दो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr, यानी कि u की वैल्यू √2gr। अब अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू √2gr होगा तो वो c को क्रॉस कर जाएगा। पर अगर b से कम, मतलब b तक पहुंचना है उसको सर्किट करने के लिए, तो √5gr से कम होना चाहिए इस रेंज में आने के लिए, c से b के बीच में। तो कंडीशन फॉर लीविंग द सर्किल हमारी क्या बन गई, u मस्ट लाई बिटवीन √2gr एंड √5gr। इसके केस में लीव कर सकता है। और ये ऑब्वियस है कि अगर सी तक ये नहीं पहुंच पाया, अगर हमारा पार्टिकल सी तक नहीं पहुंच पाया, यहीं कहीं बीच में रहा, तो उसके केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा ऐसे ऐसे करके। इसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ पर आया तो ये ऐसे ऐसे यूं नीचे करने लगेगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूमने लगेगा। तो दिस बिकम्स योर कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशन फॉर एसएचएम। If u is less than or equal to √2gr, then it will do simple harmonic motion. ये 3 कंडीशन तुमको पता होनी चाहिए। सिंपल एनालिसिस है। तो क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे पूछ लेते हैं वो लोग, अगर पूछना चाहें तो एडवांस में। पर उससे पहले मैं तुम लोगों को बोलूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, टाइम कम है तो बस ये समझ लो कि क्वेश्चन पढ़ के देख लो, अगर देख कितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो, तुम कर लोगे। 4 मिनट है, देखते कितने कितने पार्ट सॉल्व कर पाओगे इसके। पैसेज टाइप क्वेश्चन है, एडवांस में आते हैं।
But in this case, the springs are in parallel or series. They are in series. No, Yes, no, no, yes. no, 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 no. They are not in series. No, they are supposed. They will be considered Sir, to be is the parallel. first one option A? Maximum elongation? No. So the option C. हाँ. शिजिता, मैक्सिमम इलोंगेशन तुमने जो निकाला mg by k1 plus k2 वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है. हाँ सर, वो मैंने देखा नहीं। हाँ, उसने वो इक्विलिब्रियम कंडीशन थोड़ी पूछी है, उसने मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है. कि मतलब जब आप इसको इधर से छोड़ दोगे ना, तो छोड़ने के बाद वो मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जाएगा. उसका अलग केस है, पता है कैसे किया होगा. मैं बताता हूँ, देखो इसने आर्ची ने कैसे किया होगा. यहाँ पर है ये. अब मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम इलोंगेशन x1 होती है यहाँ तक, जो आपने ड्रॉप डाउन किया है. तो इस ऊपर वाले की भी ऊपर जो k1 है इसकी एक्सपेंशन हुई x1, नीचे वाले की कंप्रेशन हुई. इसमें mg कितना, mg की पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुआ. तो टोटल एनर्जी, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन अगर अपन लगाएंगे, इनिशियली ये k1 k2 आने वो थे, नेचुरल थे. तो mg इंटू x1 is equal to half k1 x1 square plus half k2 x1 square. ये हो गया आपका हाफ इंटू k1 plus k2 इंटू x1 square is equal to mg x1. x1 is equal to 2mg by k1 plus k2. सिंपल. इसलिए आंसर 2mg by k1 plus k2 आ रहा है. तुम लोग बोलोगे कि यार इतना इजी था, हमसे गड़बड़ हो गई. देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एडवांस में जो गुड क्वालिटी क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं उनका सारा खेल कॉन्सेप्ट का होता है. और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम लोगों की तभी आएगी जब तुम एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, उस पर टाइम लगाओगे, उस पर सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि देखो तुम्हारा आंसर तुमने mg by k1 plus k2 आ गया, किसी और का आंसर कुछ और आएगा. लेकिन ये सारे आंसर जो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए ना, ये आंसर सबके आ सकते हैं अलग अलग केस में. किसी ने अलग सीरीज या पैरेलल लेके कर लिया होगा. तो पर राइट कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए कि वो मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा, या मैक्सिमम इलोंगेशन में कब, मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन होगी, वो सब पता होना चाहिए. अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के लिए तो मैं ये सेकंड वाले के लिए इसको मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ. अगर किसी को एसएचएम का आइडिया है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा. So I think we have to use omega root of a square minus x square. And a is the last ओमेगा, answer we got. ओमेगा ए मैक्सिमम वेलोसिटी, बी Omega, मैक्स. yes, yes. हाँ, बी Omega, मैक्स. yes. ओमेगा इंटू ए. ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज m by k1 plus k2. Yes, नहीं, yes, k1 plus k2 by m, सॉरी, yes. k1 plus k2 by Reverse. m. a is And the this third one. one is omega square a. हाँ, that one is omega square, but that is easy only if you know the SHM. Otherwise you have to find out using the work power energy, but for that you should know the maximum velocity of the block will be at the mean position. What is mean position? Equilibrium position. अश्का को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन बस इतना समझ लो तो आ जाएगा. मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा. ए इज जो तुमने अभी अभी निकाला है, ये नहीं है ए, ये तो मैक्सिमम एक्सपेंशन है. यहाँ पर जो इसकी मीन पोजीशन है दूसरी वाली है. मीन पोजीशन है वो एक्स नॉट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है. एक्स नॉट इज इक्वल टू व्हाट? mg by k1 plus k2. So 3 is option A. Third one. x1 minus x नॉट. हाँ, नो, बी. Yes, it's B. Yes, yes. है ना. ओमेगा इंटू ए विल बी इक्वल टू k1 plus k2 by m. It's actually not difficult, it's very easy, but this will be easy
what answer we are getting? D root over m pi q1 plus k2 half. Try solving at home. If you are not, Yeah. the answer for C, the C part will be B only. If you are able to, okay. Otherwise, I'll explain you in detail in the next class. And we'll start new chapter. Class 12, physics. EMI is done. After EMI, alternating current. We'll do alternating current. Okay. And